Hello dear student, welcome to the class of mathematics. Today we are going to start activity 3 of chapter number 8. But before that we discuss some notes. What is a like decimal numbers? Decimal numbers with the same number of decimal places are called like decimal numbers. That is, डेसिमल के राइट हैंड साइड में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है तो वो होगा लाइक डेसिमल नंबर्स. फॉर एग्जांपल 9.25 and 18.75 are like decimals, each having two decimal places. That means here 9.25 में डेसिमल के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट्स है एंड 18.75 में भी पॉइंट के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट्स है. दैट मीन्स दिस इज अ लाइक डेसिमल्स. नेक्स्ट, व्हाट इज अनलाइक डेसिमल नंबर्स? Decimal numbers with different number of decimal places are called unlike decimal numbers. That means decimal number में पॉइंट के राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट है तो वो अनलाइक डेसिमल नंबर्स है. फॉर एग्जांपल 7.5 and 27.05 आर अनलाइक डेसिमल नंबर्स. दैट मीन्स 7.5 में पॉइंट के राइट हैंड साइड में ओनली 1 डिजिट है एंड 27.05 में पॉइंट के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट्स है. सो दीज आर अनलाइक डेसिमल नंबर्स. दैट मीन्स पॉइंट के राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ डिजिट अगर सेम है तो वो लाइक डेसिमल नंबर्स है एंड अगर सेम नहीं है तो वो अनलाइक डेसिमल नंबर्स है. नेक्स्ट वी सी हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स. We can convert unlike decimals to like decimals by adding appropriate number of zeros to the extreme right side of the decimal part of a decimal. That means unlike decimal को like decimal में convert करने के लिए decimal part के extreme right side पे हम zero add करेंगे. For example, convert the following into like decimals: 3.8, 4.275, 5.05, 6.5. यहाँ पे ये सारे नंबर्स में पॉइंट के राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है. दैट मीन्स ये सारे अनलाइक डेसिमल्स है, उसको हमें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है. We observe that maximum number of decimal places in given number is 3. So each of these decimal have to be converted to decimal with 3 decimal places. So 3.8 is equal to 3.800. यहाँ पे पॉइंट के राइट हैंड साइड में 2 0 ऐड किया जिससे पॉइंट के राइट हैंड साइड में हमें 3 डिजिट मिलेंगे. 4.275 इज इक्वल टू 4.275. यहाँ पे डेसिमल के राइट हैंड साइड में 3 डिजिट है तो उसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट 5.05 इज इक्वल टू 5.050 पे हमने 1 0 ऐड किया है एट एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द डेसिमल पार्ट. नेक्स्ट 6.5 इज इक्वल टू 6.500. यहाँ पर हमने 2 0 ऐड किया है. सो 3.800, 4.275, 5.050 and 6.500 are required like decimals. Next, the value of a decimal number does not change if more zero are added to extreme right of decimal number. That means डेसिमल नंबर के डेसिमल पार्ट में एक्सट्रीम राइट साइड पे ज़ीरो ऐड करने से डेसिमल नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती. नेक्स्ट वी डिस्कस हाउ टू कंपेयर डेसिमल नंबर्स. टू कंपेयर डेसिमल नंबर्स वी फॉलोज बिलो स्टेप्स. फर्स्ट,
convert unlike decimals into like decimal first. That means फर्स्ट ऑफ ऑल हम अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे. सेकेंड, कंपेयर द होल नंबर पार्ट्स. दैट मीन्स डेसिमल नंबर में होल नंबर पार्ट जो है उसको कंपेयर करेंगे. थर्ड, इफ होल नंबर पार्ट आर सेम देन कम टू द फ्रैक्शनल पार्ट एंड कंपेयर टेंस, हंड्रेड्स एंड सो ऑन. दैट मीन्स अगर डेसिमल नंबर में होल नंबर पार्ट अगर सेम है तो हम उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट को कंपेयर करेंगे. फ्रैक्शनल पार्ट को कंपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेंस प्लेस को कंपेयर करेंगे, उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस को कंपेयर करेंगे एंड सो ऑन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्टिविटी 3. क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल्स. ए 5.8, 79.25, 0.008. हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 5.8 में 1 डेसिमल प्लेसेस है, 79.25 में 2 डेसिमल प्लेसेस है एंड 0.008 में 3 डेसिमल प्लेसेस है. सो यहाँ पे मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस 3 है. सो ये दोनों को भी हम 3 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करेंगे. सो maximum number of decimal places in given numbers is 3. So each of these decimals have to be converted to decimals with 3 decimal places. That means ये सारे नंबर्स को हम 3 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट कर देंगे. सो 5.8 इज इक्वल टू 5.800, 79.25 is equal to 79.250 and 0.008 is equal to 0.008. Thus 5.800, 79.250 and 0.008 are required like decimals. Next, B 0.6, 3.519, 5.38 and 9.7. Here, maximum number of decimal places in given numbers is 3. Maximum number of decimal places in given number
is 3. So, each of these decimals have to be converted to decimals with 3 decimal places. So 0.6 is equal to 0.600, 3.519 is equal to 3.519 because यहाँ पे ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेसेस है, सो हम एक्स्ट्रा ज़ीरो ऐड नहीं करेंगे. एंड 5.38 इज इक्वल टू 5.380 and 9.7 is equal to 9.700. Next, C 1.8, 0.07, 3.2, 2.026. Here, maximum number of decimal places in given numbers is 3. So, convert each of these decimal numbers to decimals with 3 decimal places. So 1.8 is equal to 1.800, 0.07 is equal to 0.070, 3.2 is equal to 3.200 and 2.026 is equal to 2.026 because in this number already we have 3 decimal places. Thus 1.800, 0.070, 3.200, 2.026 are like decimals. नेक्स्ट डी आपको होमवर्क में करना है CW बुक में. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. Fill in the blanks using greater than, less than or equal to. A 57.7, that is 35.7. Here we observe that whole part of this decimal number is greater than this decimal number, that is 53 is greater than 35. Therefore 53.7 is greater than 35.7. So we get 53.7 is greater than 35.7. Next, B 19.705
dash 19.75. First of all, we convert unlike decimals into like decimals. So 19.705 is equal to 19.705 and 19.75 convert into 19.750. Now both have same decimal places. If the whole number parts are same, we compare decimal parts. Since 0 hundreds is less than 5 hundredths. Therefore, 19.705 is less than 19.750. Next, C 3.83 dash 3.38. As the whole number parts are same, we compare decimal parts. Since 8 tenths is greater than 3 tenths. Therefore, 3.83 is greater than 3.38. Next, D 150.06 dash 150.006. As the whole number parts are same, we compare the decimal parts. Since 6 hundredths is greater than 0 hundredths. Therefore, 150.06 is greater than 150.006. Next, E 6.6 dash 6.06. As the whole number parts are same, we compare the decimal parts. So 6 tenths is greater than 0 tenths. Therefore, 6.6 is greater than 6.06. Next, G 0.01 dash 0.010. As the whole number parts are same, we compare the decimal parts. First of all, we convert unlike decimals into like decimals. We have 0.01 is equal to 0.010 and 0.010 is equal to 0.010. Therefore, 0.010
0.001 is equal to 0.010. So these two decimal numbers are equal. Next, F and H you will do in homework in CW book. Next, we solve question number 3. Arrange the following numbers in ascending order. A 6.3, 2.4, 5.37, 8.14, 6.03. Arranging the given decimal in place value chart. 6.3 में 6 वंस पे है एंड 3 टेंथ्स पे है. 2.4 में 2 वंस पे है एंड 4 टेंथ्स पे है. 5.37 में 5 वंस पे है, 3 टेंथ्स पे है एंड 7 हंड्रेड्स पे है. 8.14 में 8 वंस पे है, 1 टेंथ्स पे है एंड 4 हंड्रेड्स पे है. 6.03 में 6 वंस पे है, 0 टेंथ्स पे है एंड 3 हंड्रेड्स पे है. We put 0 at remaining place. Now comparing according to the place value, we have decimal numbers in ascending order as 2.4 less than 5.37 less than 6.03 less than 6.3 less than 8.14. Next, B 0.9, 0.009, 0.09, 9.09, 0.99 and 9.9. Arranging the given decimals in place value chart. 0.9 में 0 वंस पे है एंड 9 टेंथ्स पे है. 0.009 में 0 वंस पे है, सेकेंड 0 टेंथ्स पे है, थर्ड 0 हंड्रेड्स पे है एंड 9 थाउजेंड्स पे है. 0.009 में फर्स्ट 0 वंस पे है, सेकेंड 0 टेंथ्स पे है एंड 9 हंड्रेड्स पे है. 9.09 में फर्स्ट 9 वंस पे है, 0 टेंथ्स पे है एंड सेकेंड 9 हंड्रेड्स पे है. 0.99 में 0 वंस पे है, फर्स्ट 9 टेंथ्स पे है एंड सेकेंड 9 हंड्रेड्स पे है. 9.9 में फर्स्ट 9 वंस पे है एंड सेकेंड 9 टेंथ्स पे है. We put 0 at remaining places. Comparing according to the place value
we have the numbers in ascending order as follows. 0.009 is less than 0.09 is less than 0.9 is less than 0.99 is less than 9.09 and this is less than 9.9. Next, see 7.2, 4.3, 4.03, 2.7, 3.4, 2.007. Arranging the given decimal in place value chart. 7.2 में 7 वंस पे है एंड 2 टेंस पे है. 4.3 में 4 वंस पे है एंड 3 टेंस पे है. 4.03 में 4 वंस पे है, 0 टेंस पे है एंड 3 हंड्रेड्स पे है. 2.7 में 2 वंस पे है एंड 7 टेंस पे है. 3.4 में 3 वंस पे है एंड 4 टेंस पे है. 2.007 में 2 वंस पे है, 0 टेंस पे है, सेकेंड 0 हंड्रेड्स पे है एंड 7 थाउजेंड्स पे है. We put 0 at remaining places. Now, comparing according to the place value, we have decimal numbers in ascending order as 2.007 is less than 2.7 is less than 3.4 is less than 4.03 is less than 4.3 is less than 7.2. नेक्स्ट डी आपको होमवर्क में करना है सीरियल वैल्यू बुक में. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ए 87.6, 78.6, 67.8, 6.78 and 7.68. Arranging the given decimals in place value chart. 87.6 में 8 टेंस पे है, 7 वंस पे है एंड 6 टेंस पे है. 78.6 में 7 टेंस पे है, 8 वंस पे है एंड 6 टेंस पे है. 67.8 में 6 टेंस पे है, 7 वंस पे है एंड 8 टेंस पे है. 6.78 में 6 वंस पे है, 7 टेंस पे है एंड 8 हंड्रेड्स पे है. 7.68 में 7 वंस पे है, 6 टेंस पे है एंड 8 हंड्रेड्स पे है. We put 0 at remaining places.
Comparing according to the place value, we have decimal number in descending order as follows. 87.6 is greater than 78.6 is greater than 60. 7.8 is greater than 7.68 is greater than 6.78. Next we solve B 44.43, 444.3, 43.44, 434.4, 34.44. Arranging the given decimals in place value chart. 44.43 में फर्स्ट 4 टेंस पे है, सेकंड 4 वंस पे है, थर्ड 4 टेंस पे है एंड 3 हंड्रेड्स पे है। 444 में 4 हंड्रेड्स पे है, सेकंड 4 टेंस पे है, थर्ड 4 वंस पे है एंड 3 टेंस पे है। 43.44 में फर्स्ट 4 टेंस पे है, 3 वंस पे है, सेकंड 4 टेंस पे है एंड थर्ड 4 हंड्रेड्स पे है। 434.4 में फर्स्ट 4 हंड्रेड्स पे है, 3 टेंस पे है, सेकंड 4 वंस पे है एंड थर्ड 4 टेंस पे है। 34.44 में 3 टेंस पे है, 4 वंस पे है, सेकंड 4 टेंस पे है एंड थर्ड 4 हंड्रेड्स पे है। We put 0 at remaining places. Comparing according to place value, we have decimal numbers in descending order as 444.3 is greater than 434.4 is greater than 44.43 is greater than 43.44 is greater than 34.44. Next, see 0.5, 5.5, 0.005, 50.0.5, 5.005. Arranging the given decimal in place value chart.
0.5 में 0 वंस पे है, 5 टेंस पे है। 5.5 में फर्स्ट 5 वंस पे है एंड सेकेंड 5 टेंस पे है। 0.005 में 0 वंस पे है, सेकेंड 0 टेंस पे है, थर्ड 0 हंड्रेड्स पे है एंड 5 थाउजेंड्स पे है। 50.05 में 5 टेंस पे है, 0 वंस पे है, सेकेंड 0 टेंस पे है एंड सेकेंड 5 हंड्रेड्स पे है। 5.005 में 5 वंस पे है, फर्स्ट 0 टेंस पे है, सेकेंड 0 हंड्रेड्स पे है एंड सेकेंड 5 थाउजेंड्स पे है। कंपेयरिंग according to place value, we have decimal number in descending order as 50.05 is greater than 5.5 is greater than 5.005 is greater than 0.5 is greater than 0.005. नेक्स्ट टी आपको होमवर्क में करना है CW बुक में। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. राइट टू इक्विवेलेंट डेसिमल ऑफ 0.5, 3.03 and 19.91. We know that the value of decimal number does not change if more zero are added to the extreme right of a decimal number. So 0.5 is equal to 0.50 is equal to 0.500. Same as above, 3.03 is equal to 3.030 and this is equal to 3.0300 and 19.91 is equal to 19.910. This is equal to 19.9100. These are two equivalent decimal of given numbers. Here we completed activity 3 of chapter number 8. Thank you, all of you.